Today we are going to start. Today we are going to start a day one introduction to Python. And in today's session, we are going to cover how the Python compiler can be installed and how the basic program can be written by using this integrated environment. And what are the different data types available and how we can create our variables in Python. Someone okay. So in the first session, we just going to see what is this Python. So these are the basic concepts that we are going to cover in the today's session. What is this Python? What are the different type of varieties of the Python available and which version or which flavor we are going to use? This is IDLE. Different environments are available to run the Python programs, but we are going to use this IDLE, Integrated Development and Learning Environment. How the environment variable can be set and what are the different basic data types available in the Python and how we can write a first basic program using this IDLE environment. So in any programming language, we have some keywords. We have some keywords and we have some variables. We have some literals. So different what are the difference between these keywords, variables, and literals? We are just going to understand this concept. In Python language, we try to write a program. So in any language, in any programming language, we try to write a program. And this program is going to convert it into a executable format. Executable format. And this program is going to run on your system. But this is the scenario with the C or the C++ language. But in case of a Java or in case of a .NET, we have a program, but this program is converted into a bytecode. And this bytecode is then again converted into a executable format. And this program is going to run. In this case, we are going to use either the compiler or the interpreter. In this case also, we are going to use the compiler. And at this point, we are going to use Java virtual machine. Java virtual machine. So what is the advantage of this Java virtual machine? What is the advantage of this Java virtual machine? JVM. So this concept is used
this bytecode concept is used just to make the language platform independent. This concept is just used to make the language platform independent. What is the meaning of this platform independence? हमने किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम है, एंड इन दिस सिस्टम we have written some program, but this program is required, this program is going to be executed on a different type of machine. So this is a normal machine that we have. It may be a Windows or a Linux system, but this program is required to be executed on a mobile or any electronic device. So in this case, जो भी प्रोग्राम अब यहाँ पर राइट अप कर रहे हैं, this program will be converted into an executable code by using this compiler. And this program is going to be executed on the same type of machine and in same type of environment. अगर Windows environment है, वो Windows environment में ही execute होगा. Linux environment है, तो Linux environment में ही execute होगा. But I want my program to be executed on different type of environment. तो हमने प्रोग्राम को विंडोज एनवायरनमेंट में राइटअप किया है, बट आई वांट टू एग्जीक्यूट इट ऑन अ एंड्रॉयड सिस्टम और अ लाइनक्स सिस्टम. So in this case, this program is converted into a intermediate language, that is bytecode. And this bytecode is now again converted into this executable code according to the machine on which I want to execute. तो इस बाइट कोड को हम इस मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो इन दिस केस वी नीड अ वर्चुअल मशीन हेयर, वर्चुअल मशीन. और ये बाइट कोड अकॉर्डिंगली इस वर्चुअल मशीन के बेस पर अगेन कन्वर्ट होगा इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, और आपका प्रोग्राम इस पर्टिकुलर डिवाइस पर एग्जीक्यूट होता है. So we have written a program on one type of machine, and this program is going to execute on a different type of machine only if that particular machine have the virtual machine installed. So this is in case of a Java, this is a JRE, Java Runtime Environment, or we can also call it a Java Virtual Machine. Similarly, in case of a .NET, also we have a .NET virtual machine. And in case of a Python, again, in case of a Python also support the platform independence concept. And in this case, we have PVM, Python Virtual Machine. So हम प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे राइट अप कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस program on a Linux environment or a mobile device or any other electronic device, then if that particular device have the Python environment installed on that particular device, हमारा ये program particular machine पर execute होगा. It means Python also support the virtual machine concept. तो Python के केस में भी जो प्रोग्राम आप राइट अप कर रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइट कोड. This program is converted into a bytecode by using this compiler, and this bytecode is now passed to the PVM. So this bytecode is now converted into a executable code, and accordingly this program is going to run on that particular device. So this is the case.
now applicable on the Python also. तो ये कंसेप्ट पहले जावा या डॉटनेट के साथ था, एंड जावा एंड डॉटनेट आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, but we need the same type of feature on the free language. So Python is available under a open source, and the same type of feature, the feature that are available with the Java and .NET is now also available in the Python. So any program that can be written using a Java or a .NET can also be implemented by using this Python. So Python also support the platform independence concept. And in this case, जो भी program आप write up कर रहे हैं, this program is going to convert it into a bytecode by using this compiler. And this bytecode is now executed on the particular device by using this Python virtual machine. इस कंसेप्ट में किसी का कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में समझा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा आवाज़ बहुत स्लो आ रही है मेरे पास और समझ नहीं पाए। ठीक है। यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं किसी भी सी या सी प्लस में, वो प्रोग्राम आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड में, एग्जीक्यूटेबल कोड मीन्स मशीन लैंग्वेज, ये प्रोग्राम मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस कंपाइलर। और कंपाइलर एक ही सिस्टम, एक ही टाइप के सिस्टम के लिए वर्क करता है। अगर यहाँ पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करेगा वो विंडोज सिस्टम के लिए ही करेगा। अगर लाइनक्स का सिस्टम है तो लाइनक्स के सिस्टम के लिए ही करेगा। बट जावा में एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपने प्रोग्राम जो लिखा है, इस प्रोग्राम को आप कंपाइलर से बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका विंडोज सिस्टम है, तो विंडोज सिस्टम पे आपने ये बाइट कोड कन्वर्ट कर लिया और ये बाइट कोड मशीन कोड नहीं है। अब ये बाइट कोड लाइनक्स के सिस्टम में अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो लाइनक्स सिस्टम पे आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो अगर रन टाइम एनवायरनमेंट लाइनक्स सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो ये बाइट कोड लाइनक्स सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बाइट कोड लाइनक्स सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। आपने प्रोग्राम कहाँ पे लिखा था? विंडोज सिस्टम पे, और एग्जीक्यूट कहाँ पर हो रहा है? लाइनक्स सिस्टम पे। तो ये बाइट कोड लाइनक्स सिस्टम पे अगर इंस्टॉल करना, एग्जीक्यूट करना है तो इस लाइनक्स के सिस्टम पे वर्चुअल मशीन होना ज़रूरी है। जावा का वर्चुअल मशीन होना ज़रूरी है, तभी वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये फीचर किस में अवेलेबल है? जावा या डॉटनेट में, सी या सी प्लस प्लस के साथ अवेलेबल नहीं था। इसीलिए जावा का प्रोग्राम, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर हो पाया, बिकॉज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। अब जावा या डॉटनेट यूज करना है तो यू हैव टू पे अ लाइसेंस फी, आपको लाइसेंस फी पे करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो इन सभी कंसेप्ट को, सभी फीचर को अलाउ करता हो, बट हमें कोई फी पे करनी ना पड़े। तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोई भी फी हमें पे नहीं करनी पड़ती। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। पाइथन या पाइथन से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, सभी लाइब्रेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में भी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो प्रोग्राम हम लिखते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में, इसे हम कंपाइलर को यूज करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये बाइट कोड किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है अगर पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हो तो। पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड हो तो अगर आपने अपने सिस्टम पे कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप अपने मोबाइल पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो जो कंपाइलर हम देखेंगे अपने सिस्टम के लिए
सेम ऐसा ही एक कंपाइलर आपके मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर पायरॉइड नाम का पाइथन का कंपाइलर है, वो मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम आप मोबाइल पे टेस्ट कर लेंगे वो आपके सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो थैंक यू सर। पाया? यस सर, थैंक यू सर। तो ये कंसेप्ट पाइथन का है। पाइथन आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कंसेप्ट को अलाउ करता है। पाइथन में भी जो कोड बनते हैं ये बाइट कोड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एंड दिस कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन अ सिस्टम बाय यूजिंग दिस पाइथन वर्चुअल machine. So this program is converted into a bytecode by using this compiler, and this bytecode is going to execute on a system by using the interpreter. So at this point, program to the bytecode is converted by the compiler, and bytecode to the executable code is converted by using this interpreter concept. I hope you all are aware of what is the difference between the compiler and the interpreter. Compiler is going to convert the complete program in a single go, but an interpreter is going to convert a line by line instruction into a executable code. So this is what is the concept of platform independence that is supported by the Python. Next is what is the variable and literal. हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस? Any programming language is used to handle a different type of data. So what are the different type of data that can we have? This is the data. This is the data. This is the data. And this is the data. So these are the different type of data that we can have. So this is a set of numbers. This is a set of characters. This is also a set of alphanumeric data. Alphanumeric data. So this is only alphabets. So we can have alphabets. We can have a set of digits or a symbol or a numbers. Or we have a set of numerical numbers only. So these are the different type of data that we can have. So in case of Python, this two type of category is handled by using the string data type. These two categories come under a string, and this comes under a number. तो अगर केवल डिजिट्स या डॉट सिंबल है तो वो नंबर कैटेगरी में है। अल्फाबेट या सेट ऑफ डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स comes under a string. So these are the two categories of data that we have to handle. So
This is also called a literals. This is also called a literals, the value that we are going to handle in a program. So whenever we want to store a name for further processing, we store it in a name. Suppose this N is this Ajay Verma. हम N में इस अजय वर्मा को स्टोर करना चाहते हैं, या फिर B equal to 56780 or C equal to 27.38. So this is a data that we have stored in the named location. तो ये डाटा है और इस डाटा को हमने इस नेम्ड लोकेशन में स्टोर किया है. So this named location is called a variable name, and this data is called a literal. So variables store the literals. Variables store a literals, and this literals can be modified during the execution of program. So variable, the location where we are going to store this literals. Literal is the actual data that we are going to handle, and this literals can be a string, can be a number. So it comes under a two different categories. So there is further categorization of the number data. Number को भी हम integer और float में divide कर सकते हैं. तो literals की कितनी categories हैं, उसमें कौन कौन से symbols allowed हैं, ये हम आने वाले classes में देखेंगे. strings को हम कैसे process कर सकते हैं, वो भी हम आने वाले classes में देखेंगे. आज हम देख रहे हैं कि Python में हम वेरिएबल और लिटरल्स को कैसे हैंडल करते हैं. तो बेसिक लिटरल्स स्ट्रिंग और नंबर किस टाइप के हैं और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो कैसे स्टोर किया जा सकता है. So this is the concept of Python virtual machine, the compiler, the interpreter, the literals, and the variables. So variable, literals, these are the different concepts available in the Python also. So this is some of the basic concept related with the Python. So Python was created by the Vidovanth Rasham in 1991, and we are going to learn it after 30 years. So in the last 30 years, there was so much development in this language. ये पिछले 30 इयर्स में अगर हम देखें तो बहुत इस लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो पाइथन को और भी एनरिच करते हैं सो दैट वी कैन हैंडल अ मोर सोफिस्टिकेटेड टास्क बाय यूजिंग अ लेसर कोड. And the name given to this language Python based on this comedy series. And Python is a high-level general-purpose programming language. It can be used for writing any type of program. The Python program is compiled into the bytecode, the concept that I have discussed with you. So this program is compiled to the bytecode, and this bytecode is executed by Python virtual machine, the PVM, the environment which able to execute this Python code. And Python can be used as a scripting language or a web application, or you can write any type of program by using the GUI interface also. तो हम पाइथन को वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जीओआई इंटरफेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं. फर्दर जो हम डाटा साइंस से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, डाटा साइंस में भी हम इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. एंड बिग डाटा में भी आर या पाइथन को यूज़ किया जा सकता है. तो पाइथन है all the basic concepts
all the basic structures that are available in any other language, like the C, C++, or a Java. Python also have the variables, have the literals, have the control structures, have the functions, the modules, object-oriented concepts. All the concept of a C, C++, or a Java is also available in this Python. So Python has a strong structuring construct. इसमें वो सारे कंसेप्ट्स अवेलेबल हैं जो किसी नॉर्मल लैंग्वेज में अवेलेबल होता है. So it has a nested code blocks, the concept of a function, classes, modules, and packages. And all these concepts you will learn in the coming sessions. And we can also use the object-oriented language to write clear and the logical programs. Python is an interpreted language. But in a previous slide, I have told you that it is compiled to the bytecode. But here it is written as it is an interpreted language. So I have already told you that the program is compiled into bytecode at this point. Compiler is used, and this bytecode is executed. And at this point, interpreter is used. So this is the PVM. So actually, the PVM uses the concept of interpreter. Python is available as a free and open source, and Python can run on a different type of platforms like the Windows, Linux, or Unix. Even the Python run on your Android operating system also. We can have a different varieties of a Python. So the C Python, J Python, PyPy, Stackless Python, the Iron Python, but we are going to learn this Python 3. So the compiler provided by this particular website. So we are going to use this particular compiler, and we will see how we can download the compiler from this particular website and how we can install it on our system. Then we will see how a basic program can be written by using this compiler. So this is the website from which we can डाउनलोड द कंपाइलर. ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप पाइथन के कंपाइलर को डाउनलोड कर सकते हैं. लेट वी सी हाउ दिस वेबसाइट कैन बी यूज्ड. python.org. तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ से आप पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं. This is not the only website from where you can download the Python compiler. So if you want to use the PyCharm or the Android or any other ID, you are free to use that. But हम यहाँ पर ideally integrated environment को use कर रहे हैं because this environment requires the lesser resources. तो अगर आपके पास सिस्टम है जिसमें मिनिमम रिसोर्सेज हैं तो भी ये इजीली उस रिसोर्सेज पर वर्क कर सकता है.
बट अगर आपके पास बेटर सिस्टम्स हैं, 8 GB रैम के साथ अगर सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो आप एंड्रॉयड या एनाकोंडा एनाकोंडा वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एनाकोंडा नियर अबाउट 1.5 GB का सोर्स फाइल है, डाउनलोड करना होगा एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट। बट आइडियली जो है वो नियर अबाउट 20 और 30 MB का फाइल है, तो इट कैन बी इजीली डाउनलोडेड एंड कैन बी इंस्टॉल्ड विथ अ मिनिमम रिसोर्सेज। तो हम आइडियली को देख रहे हैं, इसे कैसे इंस्टॉल या डाउनलोड किया जा सकता है। So in case of a download, we have this version 3.10. 3.10. This is the version that we are going to download and install on our system. Python 3.9 plus cannot be used on Windows 7. तो अगर आपके पास Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 3.9 से पहले का वर्जन आपको इंस्टॉल करना होगा, लाइक द 3.7 और द 3.9 वर्जन। बट विंडो 10 या विंडो 8 अगर आपके पास है, तो आप ये करंट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप में कोई ऐसा भी है क्या जिसके पास विंडो 7 है? आप लोगों में किसी के पास विंडोज 7 का सिस्टम है क्या? यस सर, मेरे पास है। हाँ, तो फिर विंडोज उस केस में आपको विंडोज ये 3.8 वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा, 3.7 या 3.8। जी ओके सर। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताइएगा फिर, ठीक है, उसको फिर इंस्टॉल कर देंगे, रिमोट पे उसको कनेक्ट जी करके उसको इंस्टॉल कर। लेकिन ओके। अगर विंडो 8 या 10 है, तो आप इजीली इस फाइल को क्लिक कर दीजिए, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और ये फाइल 27 MB का है, 27 MB। बट मैंने आपको बताया, अगर आप एनाकोंडा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो एनाकोंडा कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए आपको नियर अबाउट 1.5 GB फाइल डाउनलोड करना होगा। तो ये फाइल हमने डाउनलोड कर लिया एंड देन जस्ट आफ्टर डाउनलोडिंग इट, जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल। और ये आपके सिस्टम पर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। सो in my system it is already installed, so I'm not going to install it. but install करने के लिए यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज। तो हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करेंगे, we click on the customize installation. In case of a customized installation, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फोल्डर में पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन यूज करेंगे। तो इस ऑप्शन को क्लिक करने से पहले यहाँ पर ऐड पाइथन 3.10 टू द पाथ, इसे भी क्लिक करना होगा। तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को क्लिक करने से पहले ये दोनों ही ऑप्शन सिलेक्टेड होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमने क्लिक कर लिया, एंड इन दिस केस ऑल द ऑप्शंस आर सेलेक्टेड एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। So in this case, if you have multiple users on your system, you can click this. अगर आपके सिस्टम पर एक ही यूजर है, बिकॉज नॉर्मली पर्सनल सिस्टम है तो एक ही यूजर होता है, बट इन केस ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट वी मे हैव अ मल्टीपल यूजर्स। तो आपके नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल फॉर और यूजर सेलेक्ट किया जा सकता है। एंड ऑलवेज confirm that add python to environment variable select होना चाहिए। So this is the location where we are going to install, but this is the very long path. So instead of this, you can create a customized folder on your PC, either on the in my case I have the C and the D drive. तो C या D drive पे किसी भी लोकेशन पर आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के नाम से, और उस फोल्डर में अकॉर्डिंगली पाइथन को इंस्टॉल
कर देंगे, so that that particular location is easily accessible. So instead of a long name like this, C user Shivlok app data local programs Python, हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इस फोल्डर के अंदर हम अपने पाइथन को इंस्टॉल कर देंगे. This 310. So this is the location where I want to install. So this is the folder that I have selected. So now my Python is going to install in this particular location. This particular location में हम Python को install कर सकते हैं. So while installing it, select customize installation, select all these checkboxes, and in the customize installation, click next and then select the path. हाँ संदीप बोलिए. अच्छा सर, ये जो इंस्टॉलेशन इससे जो पहला स्टेप था उसके अंदर जो नीचे चेक बॉक्स आ रहे हैं वो मेरे वाले जो सेटअप है उसमें नहीं शो नहीं हो रहा है. ये दोनों. हाँ जी सर, ये क्या लिखा है, इंस्टॉल लॉन्च फॉर ऑल यूजर्स रिकमेंडेड, और फिर नीचे लिखा है ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे मेरे पास. यही 3.10 ही इंस्टॉल कर रहे हैं आप. हाँ जी सर, यही है. ये 64 बिट ही है. हाँ जी सर, 64 ही है. अच्छा, कस्टमाइज में जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये हाँ ये है ऑप्शन, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल. ये है सर, ये हाँ ठीक है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है सर. हाँ वो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो ये ऑप्शन के इक्विवेलेंट है, दिस ऑप्शन ठीक है सर. ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल. और यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फोल्डर सी या डी ड्राइव पे जहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं. ये स्टेप में किसी का कोई क्वेरी है अभी पूछ लें. आफ्टर सेलेक्टिंग दिस फोल्डर जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बटन और ये आपका पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा. So installation will just take 5 minutes. 1 minute to install and maximum 1 minute to download and 2 minutes to install. So within the 5 minutes you are able to install the IDLE environment on your system. So this is how we can download the Python environment and how we can install it on our system. So this is the website on which this content is available. This compiler is available. From this, just download the content, the Python version. Currently, the Python version is 3.10. तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो दिस सेकंड ऑप्शन, दिस वन, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन. यू नीड टू सेलेक्ट जस्ट 2 ऑप्शंस. दोनों ही चेकबॉक्स सेलेक्ट होने चाहिए और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन हम सिलेक्ट करेंगे. इन दिस केस जस्ट प्रोवाइड अ folder name where you want to install your Python. And remember that this location is checked. यहाँ पर ये checked होना ज़रूरी है. This Python to your environment. And then you can just click on the install button or within a fraction of minute ये आपका Python install हो जाएगा. So how can we see whether the Python is properly installed and working or not? So in case of this, we can write IDLE. So this is the IDLE Python that is installed in my system 3.8, but currently 3.10 is available. तो आप जस्ट इस IDLE पे क्लिक कर दें.
और ये पाइथन का आइडियली स्टार्ट हो चुका है. सो इफ यू आर ऑन द यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चेक करना चाहते हैं, सो इन दिस केस यू कैन राइट पाइथन. अगर ये प्रॉपरली पाइथन वेरिएबल सेट हुआ है, एनवायरमेंट वेरिएबल प्रॉपरली सेट हुआ है, तो जस्ट टाइपिंग अ पाइथन विल वर्क. अगर एनवायरमेंट वेरिएबल प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है तो पाइथन भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा. So in this case, you can write any code just to check, or so you can write or any code here just to check whether this is working or not. So if you want to come out of this, just write quick. So this is the Python that we have run on the command prompt. तो पाइथन को हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रन नहीं करते हैं. वी हैव जस्ट checked here whether our Python is properly installed with a environment variable or not. अगर यहाँ पर पाइथन का वेरिएबल एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर पाइथन भी वर्क नहीं करेगा. इन दैट केस आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर ही पाइथन को रन करना पड़ता है. तो पाइथन पे वर्क करने के लिए हम यहाँ पर IDLE पाइथन पे ही वर्क करते हैं. सो दिस इज द इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट वेयर वी कैन राइट अ प्रोग्राम. ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं. So at this point you can again write 3.5. This is 9. You can write print. तो जो भी कोड आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. लाइक n इक्वल टू दिस अजय वर्मा. तो हमने यहाँ पर जो अजय वर्मा मैंने आपको बताया था, दिस इज एन लिटरल दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ n. तो हमने n में अगर स्टोर किया है तो whenever we write n, it will automatically extract the data that is stored in the n variable. तो n के अंदर जो भी स्टोर हुआ है उसका डाटा वो अकॉर्डिंगली फेच कर लेता है. सिमिलरली इफ वी राइट a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 20, so in this case if I want to calculate the sum a plus b, I can write a plus b. So it will fetch the data stored in this a variable and the data stored in this b variable, and accordingly we are able to calculate the sum of these two variables. तो किसी भी वेरिएबल में डाटा को स्टोर किया जा सकता है और नेम हम कुछ भी दे सकते हैं. सो एनी नेम कैन बी गिवन. नंबर 1 is 100, number 2 is 200. So any name you can give to this variable, but there is certain rule you have to follow while giving a name to the variable. हम कोई भी नाम दे सकते हैं बट वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए भी कुछ नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट नेमिंग कन्वेंशन? Only capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, and this underscore sign is allowed. This is the allowed character set. This is the allowed character set for naming the variables. So you can use any of the character set. So you can write
number 4 equal to this 100. Number 8 equal to this 20. So this is allowed. N, O and 8. But if you write N, O minus 8 equal to 20, this is invalid. This is invalid. If you write number space this 8 20, this is again invalid. Spaces हाइफन अलाउ नहीं है, तो जो अलाउड सेट हैं केवल आप उन्हें यूज कर सकते हैं. लेट वी सी हियर. Number 4 equal to this 100. Number 8 equal to this 20. Number minus 8 hyphen 8 equal to this 20. This is an invalid. Space 8 equal to 20. This is again invalid. Space या hyphen allow नहीं है. You can use uppercase alphabet, lowercase alphabet 0 to 9 and the underscore sign only. So अगर आप लिखते हैं number underscore 8 equal to 20, this is an allowed variable name. So we have number 1, number 2, number 4, number 8 and this number underscore 8. So in this case, if I write number 4, if I write number 4, so number 4 is an valid variable name. तो नंबर 4 यहाँ पर वैलिड वेरिएबल नेम है और हमने यहाँ पे नंबर 4 ही लिखा है. सो इन दिस केस इफ आई प्रेस द एंटर की हियर, this compiler showing a error message that number 4 is not defined. Number 4 is not defined. जैसे a वेरिएबल यहाँ पर है और यहाँ पे अगर a लिखते हैं a तो आ रहा है, बट अगर हम कैपिटल A लिखेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है नेम A इज नॉट डिफाइंड. इसका क्या मीनिंग, आप में कोई बता पाएंगे कि स्मॉल a तो आ रहा है बट कैपिटल A नहीं आ रहा है. क्या रीजन हो सकता है? Sir, because we did not assign a value for capital A, sir. Because this language is case sensitive. In this language, the variables are case sensitive. Okay. You are correct that we have not passed the value for the capital A. It means language is case sensitive. It means small a and different capital A are two different variable names, because small a and capital A are two different variable names. They are not same. They are not same. It means similar to the C, C++, Java or C# language, Python is also case sensitive. Python is also case sensitive. So this is how we can define our variables. But while writing a program, we normally do not write the program on this prompt. This triple greater than sign, this triple greater than sign is the prompt here. Like the C prompt, जैसे DOS prompt पे C आता है, वैसे ये Python compiler का prompt है. और यहाँ पर हम just कोई कोड को चेक कर सकते हैं, कोडिंग यहाँ पर नहीं लिखते. So where we can write a coding? So in this case, we have the file menu, edit menu, cell, debug option. So in this case, just click on the file, new file. यहाँ पर फाइल के अंदर न्यू फाइल पे आप क्लिक करें. So this is the two separate window here. This is the
main window, the compiler window, and this is the code window. And in this case, we can write any code like A equal to 10, B equal to this 20, then calculate the C, A into B, then print the data of C. So we have written 4 lines here, and I want to execute all these lines in a single go. So how you can execute it? So this is the file where you can write your script. ये एक फाइल है जहां पर आप अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे, और ये प्रोग्राम्स कौन से हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के कोड, जो पाइथन के कोड आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। तो ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होंगे, कंपाइल कैसे होंगे? सो बिफोर क्लिकिंग ऑन द रन मॉड्यूल और F5, रन मॉड्यूल या F5 को प्रेस करने से पहले ये रन ऑप्शन कहां पर आ रहा है? इस एडिटर विंडो में, इस मेन प्रोग्राम में नहीं है, इस एडिटर विंडो में है। और ये एडिटर विंडो कैसे आया? फाइल के अंदर न्यू को क्लिक करने से। इन दिस केस इफ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, जैसे आप रन मॉड्यूल क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना होता है। तो इवन इफ यू क्लिक ऑन द रन मॉड्यूल, ये आपसे पहले फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा। तो इट्स बेटर टू सेव द फाइल फर्स्ट। तो फाइल को फर्स्ट सेव कर लीजिए। So we are going to save this file, और ये फाइल जिस फोल्डर में पाइथन एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां पर आपने इंस्टॉल किया है डी ड्राइव पे पाइथन, सेम वही फोल्डर लोकेशन यहाँ पर आ जाता है। बट अगर आप डिफरेंट फोल्डर लोकेशन में अपने कंटेंट को सेव करना चाहते हैं तो आप अपने फोल्डर लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। बट इन माई केस आई एम जस्ट गोइंग टू स्टोर माई फाइल इन द सेम फोल्डर। So in this case, I am just going to write 05 09. So this is the file that I am going to save. और जो फाइल आप क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम .py है, .py पाइथन कोड। सो इन दिस केस आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट, और ये हमने सेव कर दिया। सेव करने से ये देखिए यहाँ पे इसका लोकेशन नेम शो कर रहा है, डी ड्राइव पे पाइथन 38 में 0509 p1.py। दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। और इस फाइल को रन करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द रन, देन रन मॉड्यूल। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया तो 10 × 20 200 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो हम इस कोड को यहाँ पे रन कर रहे हैं, बट इसका जो कोड है ये मेन कंपाइलर विंडो में ही यहाँ पर शो हो रहा है। if we are going to change this data, अगर हम इसे चेंज कर दे तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी डिफरेंट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो जब भी आप कोड को रन करेंगे इसका आउटपुट इस पर्टिकुलर विंडो में ही यहाँ पर डिस्प्ले होता है। So if you want to give some proper message like this, result, then see. So this is the result equal to 100. This is the result message, and this C, the product of these two numbers, the 100. So we get this proper message with this data. तो जो भी प्रोग्राम आपको टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं फिर से एक कोड और लिख रहा हूँ, फाइल, न्यू फाइल। मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से पाइथन को स्टार्ट करते हैं। दिस आइडियली और यहाँ पर फाइल, न्यू फाइल। अब हमारे पास 2 सेपरेट विंडोज आ गए हैं। ये हमारा मेन कंपाइलर का विंडो है और ये कोडिंग विंडो है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं n इक्वल टू
तो ये हमने मैसेज प्रिंट में स्ट्रिंग डाटा, नंबर डाटा दोनों को ही प्रिंट किया जा सकता है. सो इन दिस केस आई हैव पास अ मैसेज विद इन सिंगल कोट. जब भी कोई मैसेज देना है आप सिंगल कोट में दे सकते हैं. और ये एक वेरिएबल नेम है. दिस इज द वेरिएबल नेम दैट वी हैव पास. इन दिस केस द डाटा stored in this variable is going to be printed here. और ये एज मैसेज है because we have given this within the single quote as a string. और यहाँ पर हम वेरिएबल पास कर रहे हैं तो इस वेरिएबल का डाटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा. तो फर्स्ट हमें इस फाइल को सेव करना होगा. So in this case, we are just going to save this file. Then click on run module. तो यहाँ पर नेम अजय वर्मा is 34 डिस्प्ले हो रहा है. So in this case, if I write like this, मैंने n और a दोनों को ही सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दिया. इस केस में क्या आउटपुट आएगा? नेम n, एज a. तो n और a दोनों ही मैंने सिंगल कोट्स में दे दिए. इट मीन्स वो एक मैसेज बन चुका है. अब वो वेरिएबल नहीं है. तो वेरिएबल का डाटा जब भी लेना है, वेरिएबल के साथ कोट्स को हम यूज नहीं करते हैं. जब भी वेरिएबल का डाटा प्रिंट करना हो, हम उसे सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं करते हैं. I hope this difference is clear. How we can access the data of a variable and how we can print the message. Next is, in this case, suppose I have written like this. This print, some space, then print, print, then space, then print. So this is the similar code that we can write in any language. अगर आप C, C++ या Java में लिखे तो इसमें कोई भी difference नहीं है. But in case of a Python, if you try to run this code, you will get an error message. और ये error message क्या है? Unexpected indent. Unexpected indent. यानी कि जितने भी कोड हैं वो एक ही लाइन में स्टार्ट होने चाहिए. सारे कोड एक ही पर्टिकुलर कॉलम में होने चाहिए. तो हम सभी को एक ही कॉलम में कर देते हैं. अब तो सभी कॉलम में हो गए. सभी को हमने 2 नंबर कॉलम से स्टार्ट कर दिया. स्टिल वी गेट एन एरर क्योंकि सबसे पहले लाइन कॉलम नंबर 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए. अगर कॉलम नंबर 1 पे स्टार्ट हो रहा है तो बाकी के लाइंस भी कॉलम नंबर 1 से ही स्टार्ट होंगे. तो इंडेंटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ यूज किए जाते हैं. वो आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे. तो जब भी इंडेंटेशन एरर आ रहा है, इट मींस यू हैव गिवन सम स्पेसेस इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. अपने जो सिंटेक्स लिखा है वहां पर अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली एरर आएगा. सो इन दिस केस इफ आई राइट लाइक दिस, मैंने यहां पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दी, तो क्या अभी भी एरर आएगा या नहीं? कोई भी एरर यहां पर नहीं है बिकॉज विद इन द ब्रैकेट्स यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ मैसेज. यहाँ पे स्पेसिस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. बट ये लाइंस सेम कॉलम पे स्टार्ट होना चाहिए. इफ वी हैव मिस्ड अ सिंगल कोट, हमने सिंगल कोट स्टार्ट तो किया बट यहाँ पर मिस हो गया. एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल. तो जब हम स्ट्रिंग लिटरल को स्कैन कर रहे हैं, मीन्स जब कंपाइलर स्कैन कर रहा है तो स्ट्रिंग स्टार्ट तो हुआ बट उसका एंड नहीं आया. कंपाइलर ने स्ट्रिंग का एंड सर्च नहीं कर पाया. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल.
जब भी ये मैसेज आ रहा है, इट मीन्स योर क्लोजिंग apostrophe इज मिसिंग. So this is the proper message. Now, if you want to write two lines, two commands on the same lines, हमने ये एक लाइन लिखा और ये सेकेंड लाइन, ये सेकेंड कमांड और इसका रिमेनिंग कमांड. इस केस में again, if you just try to execute it, you will get an error message. In case of a Python, only one instruction per line is allowed. Only one instruction per line is allowed. If you want to write multiple line, then you have to use this semicolon. अगर आप multiple instruction को एक ही लाइन पे लिखना चाहते हैं, in that case you have to use this semicolon as a statement terminator. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रॉपर आउटपुट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हमने यहाँ पर नेम डिस्प्ले कर दिया, एन आ गया, एज डिस्प्ले किया, एज आ गया, बट नेम के आगे अजय वर्मा और एज के आगे 34 डिस्प्ले नहीं हो रहा है. हमने इसे सेपरेट लाइन में लिखा, तब भी एक के नीचे एक आ रहा है. इफ वी आर राइटिंग दिस two statement on a single line, even then we are getting the same output. We are getting a same output, but I want output on a same line, like name Ajay Verma is 34. How we can display that? So in this case, this has character is used to make the line comment. Comment means वो लाइन कंपाइल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये लाइंस आपकी कमेंट लाइन में कन्वर्ट हो गई. सो कमेंट मीन्स you can write any description related with the program, and if you want to convert a particular statement into a comment, you can just write a hash sign in the first column. फर्स्ट कॉलम पे आप हैश साइन लिख देंगे, इससे ये दोनों लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी. अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? अजय नेम अजय वर्मा. सो हाउ वी कैन राइट दैट? Name and this n. This age and this age. तो ये नेम अजय वर्मा एज 34. यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज पास करके आप उसे एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं. तो दिस इज द नेम and this is the variable having the actual name stored in it. इस n के अंदर जो डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और सिमिलरली a में जो डाटा है वो एज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. सो वी आर एबल टू शो द डाटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. तो अगर आप सिंपल प्रिंट से करते हैं तो सिंगल लाइन में रिजल्ट नहीं आएगा, बट इफ यू वांट टू शो multiple values in a single line, you can use this print method. तो print से आप multiple data को single line पे show कर सकते हैं. Now again, I'm going to close this code. Now this is length of a rectangle is 10. Width of the rectangle is 5. And I want to calculate the area. This length into this width. And now I want to display. Print
area of rectangle is this area. फाइल को सेव कर देते हैं. Area of rectangle is 50. Area of rectangle is 50. तो यहाँ पर प्रॉपर मैसेज हमारा डिस्प्ले हो रहा है. नाउ आई वांट टू शो द लेंथ एंड विड्थ आल्सो. इसमें हम लेंथ और विड्थ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो कैसे डिस्प्ले होगा? लेंथ और विड्थ भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं. लेंथ और विड्थ कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे? सर एल कॉमा डब्ल्यू लिख कर दे. अगर हम L कॉमा W लिख दें तो आ जाएगा. यस सर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 550. लेकिन ये 10 क्या है और 5 क्या है? This is the length and this is the width. तो ये पहला मैसेज हो गया, कॉमा ये लेंथ हो गया, देन वेरिएबल, कॉमा ये विड्थ हो गया, कॉमा इज W एंड देन दिस एरिया. Area of rectangle where length is 10 and width is 5 is 50. तो यहाँ पर जितने भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है उसके साथ उतने ही सिंगल कोट्स स्टार्ट होंगे और क्लोज होंगे. सो इन दिस केस एरिया ऑफ रेक्टेंगल डायमेंशन length and width equal to this. Area of rectangle with dimension length 10 width 5 equal to 50. तो ये प्रॉपर मैसेज हम यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं आफ्टर राइटिंग so much of messages, so much of single and कोट्स एंड द कॉमा. सेकंड मेथड है सेम आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए एरिया ऑफ दिस लेंथ दिस width दिस एरिया. इसमें देखिए ये जो वेरिएबल है हमने कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई किए हैं. एरिया ऑफ rectangle with length this, width this, area is this. तो आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना है चाहे दे सकते हैं. यहाँ पे मल्टीपल कोट्स स्टार्ट और क्लोज नहीं हो रहे हैं. इन दिस केस वी हैव अ सिंगल मैसेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोइंग अप टू दिस पॉइंट. सिंगल मैसेज. और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पास ऑन कर दिया है. जितने भी वेरिएबल्स हैं उसे कर्ली ब्रैकेट में पास किया है. नाउ लेट मी सी द आउटपुट.
So this is the output just because of this line, and second output just because of the second line. और यहाँ पे अगर हम देखें तो L, W और एरिया एज इट इज डिस्प्ले हो गया. हमें क्या चाहिए? लेंथ 10, width 5 and area is 50. यहाँ पे देखिए पहले L, W और एरिया आ रहा था, अब उसकी जगह 10, 5 और 30 डिस्प्ले हो गया. So in this case I have just put this F symbol. F symbol. F means formatted output. F means formatted output. So this is the message that I want to display, having some variables within the curly brackets, and if you want to fetch the value of that variable, you have to specify this F symbol. Just F symbol से आप डाटा को fetch कर सकते हैं. सिमिलरली जो हमारा नेम वाला कंसेप्ट था, जैसे n इक्वल टू दिस वर्मा and the age is this 30, print F, name is this n and age is this a. यहाँ पे जस्ट सिंगल लाइन में हमने ये कोड लिखा, नेम n एंड एज a, और a और n कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाइड है. अब इसे हम रन करके देखते हैं. नेम अजय वर्मा, एज ये कंसेप्ट क्लियर हो पाया मैसेज डिस्प्ले करने का? फॉर्मेटेड वे में आउटपुट डिस्प्ले करने का ये कंसेप्ट क्लियर हो पाया? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए हाँ, इसको. कर रहे हैं. अब ये वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं अजय वर्मा एंड ए. अब इस मैसेज को डिस्प्ले करना है तो नेम, और यहाँ पर एक्चुअल जो नेम है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, एज, और यहाँ पर एक्चुअल जो एज है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं. जो भी वेरिएबल हैं उसके डाटा को डिस्प्ले करना है तो उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं. कर्ली ब्रैकेट. अगर हम F सिंबल नहीं लिखेंगे तो देखिए स्टेप से डिस्प्ले हो रहा है, नेम एंड एज ए. बट अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में F सिंबल अप्लाई करते हैं, F सिंबल, तो जो भी कर्ली ब्रैकेट में आपने वेरिएबल लिखा है उन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड हैं वो फैच हो जाएंगे और वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे. just because of this F, n में जो डाटा स्टोर है और a में जो डाटा स्टोर है वो यहाँ पर फैच हो गया और डिस्प्ले हो गया. संदीप ये क्लियर हो पाया क्या? हाँ जी सर, ठीक है, ओके सर. सर हाँ. एफ से ही होता है कि मतलब डायरेक्ट जैसे हमने ऊपर प्रिंट लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द डायमेंशन या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे करके भी ले सकते हैं? हाँ, ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ना ये सिंगल कोट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ पे क्लोज करना है सर. बट इन दिस केस एक सिंगल स्टार्ट हुआ और एंड हो गया. एक ही सिंगल कोड में लगा सकते हैं, जैसे यदि फर्स्ट में एफ लगाया है तो. हाँ, एफ लगाया है. ठीक है सर, ठीक. थैंक यू सर. हाँ, किसी और का भी कोई क्वेरी हो तो पूछें, बिल्कुल मैं दोबारा से रिपीट करने के लिए रेडी हूँ. किसी का कोई क्वेरी हो बिल्कुल पूछें. प्लीज रिपीट.
ठीक है ऋषभ, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें नेम और एज डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले करने का मेथड क्या है? एक तो मेथड है ये नेम, this name message, then n variable, then age message, then a variable. यहाँ पर भी हमारे पास ये आउटपुट आ जाता है, बट यहाँ पर कितने सिंगल अपोस्ट्रोफ स्टार्ट हुए उसके हिसाब से हमें इसको क्लोज करना पड़ता है। एंड सेकंड है स्ट्रीम डिस्प्ले करने के लिए ये मेथड, नेम, वैल्यू ऑफ n वेरिएबल, एज, वैल्यू ऑफ a वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जो भी वेरिएबल हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और स्टार्टिंग में f प्रोवाइड कर देते हैं। f मीन्स फॉर्मेटेड। तो फॉर्मेटेड के केस में जो भी कर्ली ब्रैकेट में आपने वेरिएबल नेम स्पेसिफाई किया है, अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो वहां से वो डाटा ले करके यहाँ पर पुट कर देगा। तो अजय वर्मा है, इस n की जगह आ जाएगा, जो 30 है Yes, yes. इस a की जगह आ जाएगा। Okay, sir. ठीक है, तो सेम टाइप का आउटपुट हम यहाँ पर डिस्प्ले करता है। बट यहाँ पे अगर सपोज हम लिख देते हैं कैपिटल एन, ठीक है, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन, तो फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम। द नेम एन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कैपिटल एन नाम का वेरिएबल यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वी हैव अ स्मॉल एन बट no capital N variable exists. That's why you are getting this error message. The N is not defined. The variable N is not Not, defined. not defined. So this is a way how we can write a formatted output. तो जो भी वेरिएबल है उसके बेस पर कैलकुलेशंस करके हम डाटा को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Happy. So now again to the slides. So for the comments, everything after the hash sign on the line is ignored. Means this is the comment line and the compiler is not going to convert this, not going to check it. तो किसी भी स्टेटमेंट से पहले अगर आप हैश साइन लगा देते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइन आपका कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपना जो माइक है वो म्यूट रखें, जब क्वेश्चन रेज करना हो उस समय केवल ऑन करें। In this case, we have the block and indentation. Block and indentation. जो भी स्टेटमेंट्स हैं सेम लेवल के, उन्हें एक के नीचे एक लिखना होता है एंड ऑल द बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट इज इंडेंटेड टुवर्ड द राइट। तो ये इंडेंटेशन जब हम लूप्स यूज करेंगे या इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे या फंक्शंस यूज करेंगे तब देखेंगे ये इंडेंटेशन कैसे वर्क करता है। Normally statements are on a separate line, but if you want to write two statements on a same line, then you can use this semicolon. Semicolon will work as a statement terminator only if you are going to write more than one statement on a same line. जब भी multiple lines को multiple statements को same line पे लिख रहे हैं, ऐसे केसेस में semicolon को आप एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज कर सकते हैं। एंड दिस डॉट पाई इज द नेम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ योर प्रोग्राम। सो हाउ कैन वी क्रिएट अ वेरिएबल? सो
Actually, the variables are containers for storing the data values. Variables are containers for storing the data. If you are a programmer of a C, C++, Java or a C Sharp, तो हम वहाँ पर A10 और B20 लिख सकते हैं क्या? C, C++, Java, C Sharp, क्या हम A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20 लिख सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं लिख सकते? क्या प्रॉब्लम है? हमें जैसे सी में इंट ए लिखते हैं वैसे लिखना होगा। Yes, in the C, C++, Java, C Sharp, in all the languages, you have to define that data type of a variable. Only then you are able to store this data. So first step is define data type. Only then you are able to store literals. तो फर्स्ट आपको डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, देन लिटरल्स. इट मीन्स अगर 10 या 20 स्टोर करना है तो सी, सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प के केस में इंट ए, बी, ये हमने डाटा टाइप डिफाइन कर दिया वेरिएबल का. ओनली देन वी आर एबल टू राइट A10 and B20. But in case of a Python, this is directly done. हम पाइथन में डायरेक्टली वेरिएबल्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं. तो क्या पाइथन में डाटा टाइप नहीं होता है क्या? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डाटा टाइप? डाटा टाइप का पर्पस क्या है? सर डिफाइन करना कि इंटीजर है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डेटा टाइप को डिफाइन करना. डाटा टाइप और क्या डिफाइन करता है? एक तो आपने बताया सर इंटीजर, तो नहीं है, रेंज और डोमेन. ठीक है, रेंज और डोमेन, हाँ, डोमेन ऑफ वैल्यू. और क्या डाटा टाइप डिफाइन करता है? एरे सर, फ्लोट, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ओके, ऑपरेशंस अलाउ. डाटा टाइप ये डिफाइन करता है ना, कौन कौन सी वैल्यूज उसमें अलाउड हैं और कौन से ऑपरेशंस उसमें अलाउड हैं. ठीक है. एंड थर्ड इज द memory requirement. ओके सर, So these are the three things defined by this data type. So data type defines the memory requirement, it defines the range or domain of a value that can be stored in that variable or the different type of operations allowed on that particular variable. तो यहाँ पर A और B है तो इसमें आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिंग डाटा है तो वहाँ पर एडिशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता. सिमिलरली इन केस ऑफ अ पाइथन आपने सिंपली 10 और 20 लिखा, तो क्या यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन नहीं हो रहा है क्या? बिकॉज हमने तो डिफाइन नहीं किया. आप ये कह सकते हैं कि जब हमने डिफाइन नहीं किया तो डाटा टाइप डिफाइन नहीं हो रहा होगा. सो लेट वी चेक whether the data type is defined here or not. So in this case, A equal to 10 and B equal to 20. तो A और B वेरिएबल हमने डिफाइन किए. A plus B एडिशन परफॉर्म हो रहा है. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट 10 y equal to this 20. And x plus y.
तो यहाँ पर देखिए ए और बी में जब हमने प्लस साइन किया तो 30 आया, बट इन केस ऑफ x plus y we are getting 1020. Why the output is different in these two cases? Can any one of you are able to explain this output? Sir, it is treated as string. जी ये आपका ये जो सिंगल में लग गया है कोट में, हाँ, तो हाँ। स्ट्रिंग बन गया, तो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर दिया है, और ऊपर जो आपका डेटा टाइप नम में था, नम को नम में सम कर दिया था, ऐड कर दिया था उसको। तो इसका मतलब है कि पाइथन ने डाटा टाइप डिफाइन किया होगा। जी तो विदाउट डाटा टाइप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, कोई भी डाटा स्टोर नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ये क्लियर है कि हमने वेरिएबल तो क्रिएट किया, वेरिएबल यहां पे भी क्रिएट किया, यहां पे भी क्रिएट किया, बट डाटा टाइप हमने डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर डाटा टाइप डिफाइन नहीं हुआ है तो ऑपरेशन में डिफरेंस क्यों है? इट मीन्स डाटा टाइप डिफाइन हुआ है। तो इन केस ऑफ अ पाइथन, data type allocation done by compiler. So in case of Python, data type allocation done by the compiler. तो कंपाइलर डिसाइड करता है कि इन वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप appropriate operations are allowed. That's why in case of 10 plus 20, सर इसको जांच सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, कैसे होगा वो? हाँ डाटा टाइप चेक किया जा सकता है। जैसे इस केस में जो आउटपुट आ रहा है 30 आ रहा है, और इस केस में 1020 आ रहा है, यानी कि इस केस में भी डाटा टाइप अलोकेट हुआ है और इस केस में भी डाटा टाइप अलोकेट हुआ है। अभी एक क्वेरी रेज किया गया कि डाटा टाइप अगर पाइथन के कंपाइलर ने अलोकेट किया है तो क्या हम चेक कर सकते हैं क्या? देखिए ए के केस में क्या है, इंटेजर, और एक्स के केस में क्या है, स्ट्रिंग। ये क्लियर है? यस सर। हाँ, टाइप फंक्शन की हेल्प से हम वेरिएबल का डाटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो डाटा टाइप किसने असाइन किया? कंपाइलर ने। यूजर और द प्रोग्रामर इज नॉट responsible for defining the data type. Depending upon the literals that you have stored in the variable, compiler automatically allocate a proper data type, and depending upon the data type, appropriate operations are allowed on that particular variables. Python के केस में this literals, the value that you are going to store in this variable, in literals के बेस पर कंपाइलर डिसाइड करता है कि इन वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा, और जो भी डाटा टाइप अलोकेट हुआ है उसके बेस पर ऑपरेशंस उन वेरिएबल्स के ऊपर अलाउ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई in this case we are getting the concatenation result, and in this case we are getting a addition result. ये क्लियर हो पाया क्या डाटा टाइप का कंसेप्ट? Okay. So in case of a Python, we do not have a command for declaring a variable. In Python, we have no command for declaring a variable. So variable हम define नहीं कर सकते, data type compiler decide करता है। तो प्रोग्रामर का काम क्या है? Just write a variable and store the data. Write a variable and store the data. Variable कैसे define होगा, data type कैसे allocate होगा, all these are the responsibilities of a compiler. तो हमारी जितनी responsibilities कम हो जाती हैं उतना वो और easy हो जाता है।
Similarly, in this case, variable is created at the time first value assigned to it. The first time ये 5 इसको assign हुआ, ये x variable create हो गया, और ये assign हुआ तो ये y variable create हो गया. So in this case, string data type is going to allocated, and in this case, integer data type is going to allocated. और स्ट्रिंग के केस में आप सिंगल कोट्स में भी डाटा दे सकते हैं और डबल कोट्स में भी डाटा दिया जा सकता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. Whenever you want to store a group of characters, you can enclose it within a single quotes or double quotes, and you can use this print message to display the data. So this is the rules how we can define a variables. So variable naming rules. A variable can have a short name like the x and the y, or we can have a more descriptive name. So in this case, the allowed characters are capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, and underscore. So this is the only character sets that are allowed for the variables. And more some rules are variable name must start with a letter or the underscore character. Variable हमेशा letters means अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए. इट मीन्स this is a valid variable name, but this is not a valid variable name. This is also a valid variable name. तो अंडरस्कोर या अल्फाबेट से अगर वेरिएबल नेम स्टार्ट हो रहा है तो वो वैलिड है. वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. A variable name can only contain alphanumeric characters and a underscore sign. These are the allowed character sets. Variable names are case sensitive. It means this, and this. All these age variables are different because in Python, the variable names are case sensitive. So upper and the lower alphabets are different. Next is this reserve words or keywords. So we have the reserve words or the keywords. We have a variable name. What is the difference between the variable names and the keywords? So वेरिएबल नेम का मेन पर्पस क्या है? जस्ट टू स्टोर द डाटा. हम कोई भी डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. तो वी हैव सम रूल्स फॉर नेमिंग दिस वेरिएबल्स और हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. बट द कीवर्ड्स और द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम. So if you want to use this as a variable name, this is not allowed because this with is a reserve word. This with is a keyword or reserve word, and this cannot be used as a variable name. Let me check. तो हम a equal to 10 लिख पा रहे हैं. a equal to अजय भी लिख पा रहे हैं. बट अगर हम लिखते हैं with equal to this 10, you will get an error message, invalid syntax, and the reason is with is a reserve word and reserve word cannot be used as a variable name. Similarly, the 4 equal to 10, this cannot be used. तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से वर्ड रिजर्व वर्ड्स हैं? तो इस स्लाइड पे दिए हुए हैं. बट हाउ यू कैन चेक? हेल्प कीवर्ड्स. हेल्प कीवर्ड्स. तो हेल्प में जब कीवर्ड्स आप स्पेसिफाई करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट 31 नेम्स जो पाइथन में एज ए रिजर्व वर्ड या कीवर्ड वर्क करते हैं,
इसकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है और इनमें से कोई भी कीवर्ड आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो आपको चेक करना है, आप किसी भी नेम को यूज करके देखिए, असाइन करके देखिए, असाइन नहीं होगा। प्रिंट है, प्रिंट इसमें है क्या? नहीं है। तो क्या प्रिंट रिजर्व वर्ड है या नहीं है? हेलो सर, हाँ, प्रिंट जो है अब तो फंक्शन में आता है ना, प्रिंट फंक्शन में आ गया है, पहले स्टेटमेंट लेता था। प्रिंट पहले कीवर्ड में था, अब नहीं है। प्रिंट इसमें नहीं है, इट मींस तो क्या प्रिंट में अगर हम 10 करेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं सर, प्रिंट में 10 लेना तो नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन है प्री डिफाइंड। ले लिया। पहले से डिफाइंड कीवर्ड्स केवल नहीं लेगा, फंक्शन कोई भी दे दो ले लेगा। फंक्शन कीवर्ड रिजर्व वर्ड नहीं होते। अब प्रिंट में हमने 10 कर दिया, तो अगर अब हम लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो क्या होगा? वर्क नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इंटीजर यहाँ पे दिखा रहा है कि टाइप एरर में इंटीजर आर नॉट कॉलेबल, इंटीजर होता तो आता और इंटीजर ने इसे नहीं लिया। जैसे ही हमने 10 स्टोर किया ना इसमें, ये प्रिंट इंटीजर वेरिएबल बन गया। तो इंटीजर वेरिएबल को कॉल नहीं किया जा सकता, तो जो इनबिल्ट फंक्शन है अब उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस वेरिएबल को मेमोरी से हटाना पड़ेगा, ओनली देन आप ओरिजिनल फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। तो इफ यू वांट टू डिलीट दिस वेरिएबल, राइट del print। अब आप इसको यूज करके देखिए। ठीक है, ओनली ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, बाकी जितने भी इनबिल्ट फंक्शन हैं वो एज ए वेरिएबल यूज हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी सर जो कीवर्ड को, इनबिल्ट हाँ बोलिए 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 संदीप बोलिए। नहीं सर, मैं कुछ नहीं पूछ रहा था, शायद कोई दूसरा स्टूडेंट था। अच्छा, कोई और पूछ रहे हैं? सर हाँ, कोई भी पूछ रहे हैं, पूछे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तभी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कीवर्ड्स हैं केवल कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन है उसे एज ए वेरिएबल यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम सर नहीं। फंक्शन को सर वेरिएबल के रूप में यूज किया जा सकता है। फंक्शन को, हाँ ये फंक्शन ही तो है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन है ना, जी और इसको हमने एज ए वेरिएबल यूज कर लिया। ठीक है सर। देखो यहाँ पर प्रिंट इक्वल टू 10, प्रिंट प्लस 100, 110, तो प्रिंट यहाँ एक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स, आई होप ये कीवर्ड और रिजर्व वर्ड और वेरिएबल नेम में डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो पाया होगा। वेरिएबल नेम इज जस्ट यूज्ड टू स्टोर द डाटा, and keyword or a reserve word are names which are predefined in the compiler that cannot be used to store the data, that cannot be used like a variable. Next, the basic data types. So the data type define how much memory is required and what type of data that we can store in the variable. So Python have the 5 standard data type: the numbers, string, list, tuple and dictionary. So these are the new data type: list, tuple and dictionary. But numbers के केस में 128,
or 128.37. These are the two different numbers. बट अगर आप देखें तो ये एक इंटेजर डाटा है और ये एक फ्लोट डाटा है. बट both this data comes under a number category. And in case of a string, we can have the group of characters enclosed within the single quotes or double quotes. This list, tuple, and dictionary. This is the new data type that are available in a Python, and we will see what is this list, tuple, and dictionary, and how we can identify the list, tuple, and dictionary, and how the compiler will identify the list, tuple, and dictionary. तो अगर मैं लिख रहा हूं 128.37 and a equal to this, so this is a float data. This is a float data. So compiler, depending upon this data, will allocate float data type. And if I write a equal to 128, so this is a integer data type. So accordingly, compiler will allocate integer data type. If I write a equal to this Ajay, so in this case, this is the group of characters. So accordingly, compiler will assign string data type to the A. But how the compiler is able to detect the list, tuple, and dictionary? How the compiler is able to detect the list, tuple, and dictionary? We will discuss this new data type in the tomorrow's session. So this is the rules for the identifiers. In case of identifier, again, the naming rules are the same. So what is the difference between the identifier and the variables? Variable is just used to store the data, and identifier is a name which is given to a variable name or a function or a class or a module or any object. तो फंक्शन को, क्लास को, मॉड्यूल को, वेरिएबल को जो भी नाम दिए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहा जाता है. बट आइडेंटिफायर इज अ पार्ट, द वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर. वेरिएबल नेम इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर. वेरिएबल नेम इज जस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी. और आइडेंटिफायर के नेमिंग कन्वेंशन भी सेम होते हैं. तो दीज आर द वैलिड identifier name, and these symbols are not allowed in variable name or the identifier name. So this is the basic programs that we can write. Two variables, we have added this two variable into a new variable and stored in a new variable, then we have displayed the sum. और इसे हम एक न्यू प्रोग्राम में लिख के एग्जीक्यूट कर सकते. So this is the end of the today's session, and I will share the assignment in the WhatsApp group, and also I will share this PPT content and the assignment. You just try to solve the assignment, and जो भी असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे वो असाइनमेंट आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजें कल की क्लास से पहले, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है. तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. किसी का कोई क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड तो अभी आप पूछ सकते हैं.